Hey guys, it's your poker guy, and I'm very excited because we're back with the podcast. And आज भी एक काफी pressing topic के ऊपर we are going to talk, and we have with us a crusher, a cash games crusher, जिन्होंने 2018 से चालू किया around and from the entire stakes खिला है 2 and 2.5 से लेके today playing 250, 500 to 500,000. That's 1,000 no limit poker. That's what he's doing. He's also got his own coaching and staking school of sharks. And what is very impressive is he has been very vocal about rake policies at different websites. So मैं काफी बार तक ignore करता था rake के structures को. So I'm very excited to actually getting on in this discussion with Suvik here. Thank you so much for taking time out. And how many big blinds are you sacrificing for this podcast, Suvik? Thanks for having me here. And I'm not sacrificing anything. It's just from my free time. So awesome, man. Thank you, bhai. Okay. Before we start, पहले तो ये बात करते हैं कि in 5 years आपने 2018 से I believe थोड़ा poker seriously चालू किया होगा, something like that. तो इतना किया है. How has someone who starts at 2.5 and आज आप जो ये stake पे पहुंचे, which is probably the country's highest max stakes that people are playing at, how have you managed to do that, and what is the story been? Why has it been? Have you been able to crack that? Like क्यों हो पाया, इतना grow क्यों कर पाया? So not everyone does. Yeah, so that's my matlab, one thing is that you have to take it seriously, right? So it is not easy, because what happens is, as with anything that you would do if you try to start a company, right? The same things will happen. You will face issues, you will face frustration. You just have to keep on going. So in my opinion, consistency is the most important thing. When you face challenges, you just have to, do your best to get better, learn more, and see where you were wrong and improve. So I think that's what most people don't do. If everyone does that, then there will be no winners in poker. Yeah. but yeah, so I think that's the same with me as with anybody else. Consistency is underrated. Got it. So yeah, but मतलब क्या, जब 2018 में चालू किया तब से ये फोकस था कि नहीं 2.5 से मेरे को भी 10 खेलना है, बाद में 50 खेलना है, 100 खेलना है? Like how was that going? How were you planning for that? Like कि ऐसा नहीं था कि just came around suddenly, or an always cash games? हाँ, तो मतलब I had some interest in tournaments, but not much, because it requires large time commitment. Correct. Also variance is too high. So cash games, I liked it because I used to work, so I wasn't able to give 8 hours a night to play tournaments. So yeah, I just started thinking I will win some money. I didn't start thinking that one day I'll quit my job and I'll play. Nobody starts that way, right? When you're just playing 2.5, your dreams are small. Correct. तुम बस ये सोच रहे हो कि मैं 5,000 कमा लूं, 10,000 कमा लूं, right? Absolutely. Right. Correct. So वैसे it started, but then fortunately, maybe I was fortunate कि मैं थोड़ा सा मतलब I ran good maybe in the beginning. There was, जैसे मैंने Poker Stars India पे deposit किया था, तो उस समय you used to get up to 30% deposit bonus or something. So in the starting, that thing also helped me to build my bankroll. And then I started taking it seriously once I reached to 10-25. I started studying more books. Or फिर वहां से it was just a progression. Yeah. Right. But did you also have your share of यार नहीं, वो 30% बोनस हम लोग के लिए काफी बार कुछ करता नहीं है, because वो back to zero बहुत जल्दी हो जाता है. तो did you also have your share of all those moments as well? मतलब वो that was when I was not playing seriously, so I lost some money around I think 30,000 rupees यहाँ वहाँ. But then when I deposited on Poker Stars India, then at that time I just I think deposited 12,000, and I thought to myself that I'm not going to lose this. Right. So तब से I was following also bankroll management. तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं 100 binds जब तक नहीं हो जाते, I will not move up. हाँ, तो
I think that policy helped because I have lost during that time. मतलब at 10:25, I lost like 50 binds like at least 3 times. Oh wow, So अगर मेरा bankroll like if सपोर्ट I नहीं did not करता. have the 100 bind rule तो मेरा like I would have stopped playing. मतलब उस Correct, समय correct. ऐसा था. Perfect. Okay. So yeah, we won't dive too much into the details, which I would love actually, but still ठीक है. ये मुझे बताओ कि what is your current poker schedule like? अभी कितने time आप देते हो? अभी भी like on because now तो you're full time into it. You quit your job. So how many Mhm. hours a day do you grind for right now? So I grind on an average, I think 4 hours a day, 5 to 6 days a week. और कम थोड़ा सा इसलिए है कि like I ideally would like to grind मतलब 6 घंटा हाँ, मैं 5 days a week. पर्सनली एक बहुत बड़ा नंबर मन में एक्सपेक्ट कर रहा था. So yeah, that's what my follow up question, right? नहीं तो I हाँ मतलब my target is to play like around 40,000 hands a month. Okay. तो and then like consistently give like at least like 1 to 2 hours to study every day. तो मतलब it becomes like a 8 hour job, right? तो if you're अगर तुम 6 घंटे और 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और 6 घंटे खेल रहे हो और आई डोंट थिंक लाइक बिकॉज पोकर इज ऑल्सो लाइक वेरी मेंटली चैलेंजिंग, राइट? तो मुझे Correct. नहीं लगता कि तुम 12 घंटे यू कैन कंटिन्यूअसली डू इट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. तुम कर सकते हो शायद 1 महीना 2 महीना, बट साल भर 2 साल 3 साल 6 साल नहीं कर सकते. Forever नहीं कर सकते. प्लस आपके स्टेक्स पे does it somewhere create a mental this thing also कि मतलब ये थोड़ा अभी like you know maybe swings can happen, it can impact your the way you process. I don't know, I'm just from your stakes and you're so used to it, but does it create an impact because if you're playing for so long and mentally आप एकदम aware नहीं हो at that state? Definitely, because players are so good, right? So they are not making mistakes. They are not Sure. making as much Correct. mistakes. तो यहाँ पे it is even more imperative कि तुम एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए. तुम्हें उसकी रेंज क्या है, तुम्हारी रेंज क्या है, हर स्पीड पे क्या हुआ एक्शन, उससे क्या इफेक्ट पड़ा उसकी रेंज पे, तुम्हारी रेंज पे, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स अगर इफ यू आर नॉट डूइंग इट मतलब then you will just find yourself in a reverse situation and you don't know what to do and you would be like, how did I come here? इसके पास क्या क्या हो सकता है. तो like effectively you will not make good decisions. तो उस वजह से I think like to have a brain which is like not tired, it's very Sure. important. Yeah. Got it. Do you like prefer this life compared to what the job life was? This because now what you're telling me is if you're doing like about 8 hours a day and probably you're grinding maybe 6 days a week, I believe, or maybe all 7 days also. I try to grind 5 to 6 days a week, but like yeah, not 7. I think like एक दिन तो छुट्टी लेनी चाहिए. So is there a change in life? वो अच्छा लगता है आपको मतलब ये compared to your job? Is this like different or not? हाँ डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम. मुझे जब खेलना है जब नहीं खेलना है, मुझे किसी दिन इफ आई डोंट वांट टू, आई डोंट हैव टू प्ले, आई डोंट हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. I Sure. can just like go and just sit in front of TV. Like I I can do anything, right? और Sure. जॉब में there is no freedom like that. Absolutely. तुम्हें अगर तुम्हारी like you're not feeling well, you're feeling low, तुम्हें कोई और like your health wise you're not okay, or you're upset about something, you still have to go to Doesn't work. matter. Correct. तुम्हें काम तो करना ही है और तुम्हें कुछ खत्म करना है, किसी डेट को डेडलाइन है तो करना ही है, राइट? तो there is no option. तो yeah, definitely मतलब So this is I forever. this is better. So poker is forever now. Are you like, is that something which you're happy like planned कि नहीं ठीक है मैं ये forever करूंगा ये चीज? I don't think I will do it forever. Okay. I like my plan is to do it for as long as I enjoy it. Sure. But I mean, I'm sure there will come a time when I will just not like the grind. Sure. So yeah, I mean, like You're open to it, but you don't have the answer to it, but you're open to that yeah, idea. yeah. I don't have a yes or no answer. Like if I Sure. continue enjoying it 15 years from now, I will continue playing, right? But Got it. yeah. Perfect है. Let's before we go आप मेरे को ये बताओ कि फर्दर के 5 secrets of cash games यार, मतलब आप कैसे हारो नहीं, because cash games में ये story है, whoever I talk to at the level that we are at, where everyone's talking about कि यार cash games में कुछ पड़ ही नहीं रहा है, 2 बाइन ऊपर गए 2 बाइन नीचे गए 5 बाइन ऊपर गए 4 बाइन डाउन गए, एंड में पता ही नहीं चलता है क्या हुआ है. So and stakes बढ़ गए. Do you have any certain things के यार ये चीज को तो ध्यान रखना ही है पहले? Do you follow anything like that?
At your stake, it's completely different, but So still. matlab, I feel for like beginners, there are like some quick fixes, right? Sure. So at my stakes, maybe there are not many quick fixes, Correct. but like people who are at playing mid stakes or low stakes, so unke liye, I don't know if I will be able to come up with five, but Sure, there how are many ever few. you can. I'll go through them. So first of all, like sometimes people play just too many hands. So you Correct. cannot do that, because if you are participating in too many hands, you're playing a weak range, you're paying more rake, it's not good, right? Then second thing is people don't raise from the late positions. And most of the money that is made in poker is made by winning the blinds. And like Even in cash games, not only even in staking in cash games, tourney, yeah, even in cash games, your target is, unless you have like queens, kings, aces, or ace king, you don't want to see a flop. You just, even jacks don't want to see a flop. Jacks will be happy to just win the blinds, right? sure. So that's the goal, to just win the blinds and the hand pre-flop, not see like anything. So yeah, late positions like small blind, cut off, big blind, you have to raise a lot. So that's another very important one. Second is like, be aggressive. Do not chase draws. Okay. So like people do that a lot. People think ki, like, yeah, I will just call one street and then, but sometimes like your gut shot is not worth it Sure. compared to the bet size, right? So matlab agar if you're being charged a heavy amount, so just like Not fold. worth it. Jane do. Yeah, nothing wrong with folding, right? So yeah, so that I Don't think play will too be many top. hands. Yeah, don't play too many hands. Learn to fold. Do not chase your draws. And second point, जो आपने कहा late position से be more this thing. Just try getting the hands going. Raise more. Yeah, Perfect. definitely. Perfect. मतलब बहुत ज़्यादा valuable है, to be honest. But ठीक है. So with School of Sharks now, with that, are you feeling के cash games में you are creating many more monsters like you? Does that happen? Does that thought come कि यार ऐसे हो जाएगा तो फिर मैं beat किसको करूंगा जो 50 मतलब जो 100 200 पे और आगे खेल रहा है सब लोग. uh nahi, it's not like that, because like I don't know, it ऐसा होगा कि अगर if we don't do it, अगर like if we don't teach them, then somebody else will, ऐसा. Sure. So like there are already like so many poker sites, Coachings. there are Yeah. already Yeah. so many staking stables, right? So it's not like that कि मतलब हम किसी को रोक सकते हैं. You cannot stop people from becoming good, है ना? So the Right. only thing you can do is like, you like sharing of your knowledge is also like another aspect that people enjoy, right? Like at least Sure. I enjoy. And you also like, there is money to be made for both of us, for both the parties, right? So Correct. like it's a good situation for both. Got it. चलो ठीक है. Coming to the topic of rake. Okay. अभी मतलब this is a little bit about you. Let's discuss a little bit about rake and बहुत basic से चालू करते हैं. Rake वो हो गया जो एक जो साइट चार्ज करती है, जो भी पॉट हो गया, 1000 रुपए का पॉट बन गया. एवरेज रेक 5% पकड़ते हैं तो उसने उसमें से 50 रुपया ले लिया. ओके, इज दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग? तो जितने भी पॉट्स होते जाएंगे, एक टेबल अगर simultaneously 100 tables are working on a poker website, they are making rake on every of the 100 tables. So this is how poker websites make money. Tournaments में जो है वो मेन पैसा नहीं होता है, राइट? उनका tournaments is not the main money. ठीक है. So when we come to this rake topic, काफी बार और जब मैंने चालू भी किया तो मेरे माइंड में ये, of course you see a lot on Facebook and everywhere कि रेक है बहुत ज्यादा, it's not profitable to play. मेरे मन में ये था, मैंने 20,000 डिपॉजिट किया है, मैं खेल रहा हूँ 5-10 पे, 10-25 पे, एंड यार 20,000 का 60,000 हो चुका है. तो 60,000 हो चुका है, 40,000 के ऊपर अब रेक टीडीएस भरना पड़ेगा आपको, तो आपने 30% भर दिया, 12,000, 28,000 मेरा प्रॉफिट हो गया. दिस इज हाउ अ कॉमन पर्सन थॉट, एंड वी डिड नॉट इवन कंसिडर कि भाई रेक क्या हो रहा है. तो how, क्योंकि then there are many statements like this, right? कि with high rake plus TDS it's impossible to crack poker profitably, like I've heard these statements. तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये चीज कैसे हो जाती है? बिकॉज यहाँ तो प्रॉफिट हो गया मेरा, इफ यू आर प्लेइंग डिसेंट एंड आपने ये प्रॉफिट में लेके गए तो. सो व्हाट इज
this story that is there, I mean, what does this mean exactly, that rake plus TDS profit करना बहुत मुश्किल है, and I don't want the full detail, खाली ये example पे अगर आप थोड़ा explain कर सकते। मतलब I think थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, मतलब शॉर्ट में ही, बट अच्छा आप ही करो, ओके गो फॉर इट। जस्ट शॉर्ट में। तो लाइक रेक ऐसी चीज है कि every time you participate in a pot and you see a flop, ठीक है, you pay a percentage, mostly as you said it's 5%, but ऐसा होता है कि like the equities are so close in poker that the person betting and the person calling, they are usually, the only equity difference usually between them is like 5% to 10%, ठीक है। तो मतलब you win the pot 45% of the time, I win the pot 55% of the time, ठीक है। तो that is the only difference। ऐसा नहीं होगा कि I will dominate you so much that you will win only 10% and I will win 90%, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब when my edge over you is only 10%, what if 5% of that money is taken out by the side, ठीक है। तो अगर आपने और मैंने मिलके 100 रुपए अगर पॉट में डाले, ठीक है, मुझे, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू उस पॉट में से है 10 रुपए, ठीक है, मतलब मुझे 55 रुपए जीतना चाहिए, आपको 45 रुपए जीतना चाहिए, ठीक है, और उसमें से 5 रुपए चले गए, ठीक है, तो मेरे विनिंग्स में तो कम हो गई ना, मतलब मेरी जो इफेक्टिव एज है आपके ऊपर वो कम हो गई। बट ये इक्विटी कैलकुलेट हुई अपने वो हैंड के इक्विटीज के ऊपर, इन जनरल इसमें स्किल नहीं आया, राइट? हाँ, बिकॉज अगर अपन 100 हैंड खेलेंगे तो आपकी स्किल होगी 90 और मेरी होगी 10, तो थोड़ा 90 into 55 हो जाएगा, मेरा 10 into 45 होगा, तो वो गेम पलट जाएगा, राइट? नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। नहीं, बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि स्किल एज कोई बहुत, मतलब बहुत बड़ी होती है। अब जैसे अगर आपका फ्लॉप पे पेयर आया है, ठीक है, मैं आपको फोल्ड करवा सकता हूं एक बार, मैं जब दूसरी बार करूंगा तो यू विल कॉल मी डाउन, करेक्ट, ठीक है, आप नहीं फोल्ड करोगे पेयर, मतलब मैं अगर ट्रिपल बैलर करूं तो आप नहीं करोगे। तो ये होता है कि ये एक बहुत द एजेस, आई थिंक द बेस्ट प्लेयर एंड द पीपल हु आर लूजिंग मनी, लोग सोचते हैं कि उनके बीच में ऐसा फर्क होगा कि लाइक जो जीत रहा है इतना ज्यादा पैसा वो भगवान होगा, और ये एकदम ऐसा होगा कि नहीं, एब्सोल्युटली, या करेक्ट, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, स्किल एज इज ओनली लाइक लिटिल बिट। तो आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा अगर 55 है, आपका 45 है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा स्किल है आपसे, तो मैं उस 55 को मैं 60 कर लूंगा, ठीक है, और आपका 40 हो जाएगा, उतना ही डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10% ऑफ द टाइम यू विन द पॉट एंड आई विन 90% ऑफ द टाइम, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस आता है। एंड आउट ऑफ दैट इफ समबडी टेक्स मनी, लाइक अगर 5 रुपए ले लिए तो मेरे पास 15 रुपए ही बचे, 15 बचे, जीतना चाहिए था 20, मेरे पास बचे 15। अब अगली बार 4.5 TDS लेके चला गया, हाँ 4.5 TDS लेके चला गया, लेकिन वो 4.5 भी अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने एक ही हैंड खेला है। अब जब हम ऐसे 10 हैंड खेलेंगे, ठीक है, तो ये होगा कि रेक जो है वो हर बार लेगी, और मैं उतना ही ले सकता हूँ जितना आपके पास है। आपके पास जैसे 50 रुपए है, तो मैं वो बस 50 रुपए, सो मनी इज इन द सिस्टम ओनली, सो डबल रेक हो रहा है, ट्रिपल रेक हो रहा है, 4 टाइम्स रेक हो रहा है, जितने हैंड हो गया उतनी बार रेक होगा। तो रेक किसी भी गेम में, रेक इज द बिगेस्ट विनर, ठीक है। नोबडी, लाइक एवरीबडी कंबाइंड ऑन द टेबल हु विंस लेस देन व्हाट रेक डज, मतलब ऑन एन एवरेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देयर माइट बी सम टेबल्स वेयर लाइक देयर आर like 4 people who just are going all in every hand, and then 2 guys who are winning all the money, that's different. But मैं बोल रहा हूँ on an average table, rake is the biggest winner. Rake wins about 50 to 70%, I like, on an average, I think. Sorry, 50 to 70% of all the money, like on an average that is wagered, matlab that the money that you are betting, out of that money, like in general, like I would say ki if somebody loses, like if all the losers lose 100 rupees together, correct, rake will win 50 to 70 rupees, and the winners in the game will win like 30 to 50 rupees. Got it. तो वैसे ही होता है, rake is the biggest winner, ऐसा। तो ये इतना हिडन होता है ना कि वो आपको पता ही नहीं चलता है। आपको यू वॉक आउट ऑफ द टेबल सेइंग भाई मैं तो 100 रुपया लेके बैठा था, 150 रुपया लेके निकल गया हूँ, बट व्हाट यू रियलाइज इज के ओके, सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। तो यू आर सेइंग विद ऑल दीज एजेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू विन प्रॉफिटेबली, इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस, ठीक है।
अभी लेट्स कम टू दिस थिंग. सो ओके, तो अगर इफ अ कॉमन पर्सन जो ऐसे निकल रहा है, जो मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, 20,000 का 60 कर दिया, 12,000 टैक्स भरा, 28,000 प्रॉफिट किया, चलो 7 दिन में मैंने 28,000 प्रॉफिट किया. कॉमन पर्सन जो पोकर रिक्रिएशनली खेल रहा है, ही इज वेरी हैप्पी, यार हफ्ते में 28,000 का मेरा इनकम हो गया. तो उनको ये रेक फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कि इज इट बिकॉज वो बहुत छोटा सैंपल है? जब आप 52 हफ्ते देखोगे तब पता चलेगा कि भाई तू तो लॉस में. इज दैट द स्टोरी हियर? हाँ, डेफिनेटली. मतलब जब आप व्हेन यू डू इट ओवर अ लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसा होता है कि लाइक एक मंथ यू कैन विन 30 बाइंस, 40 करेक्ट, बाइंस, करेक्ट, होता है सबके साथ. एंड देन नेक्स्ट मंथ यू लूज 10 बाइंस. मतलब तो ये सब स्विंग्स आएंगी, राइट? करेक्ट, तो एब्सोल्युटली. anybody who thinks like even in cash game ki you can predict how much money you will win every month, that's not how it works. Abhi jaise I think ek bluff the spot ka jo wo hai, like the guy, I don't remember his name somehow right now, but he showed his graphs of 2 years. One Okay, year he played the same stakes, he won $100,000. okay, अगले साल उसने जब वही स्टेक्स खेली तो he won $1 million. And he played around the same number of hands both years. sure, And that is what he was saying, that is how brutal variance is, right? That correct. you like there can be 10 times difference in the amount you win year on year, ऐसा. तो yeah, तो मतलब like if you're thinking कि रेक में नहीं जा रहा है because you won 2 months in a row, that is not The like right enough way to of a see it. sample size, right? तो तुम्हें like तुम 2 साल खेलोगे और फिर तुम बोलो कि like मैंने इतना जीता है, तो कमाया, वो हाँ. that's different. And also after 2 years, even if you have a sample size, right? तो अभी जैसे like people who are winning at like 10 PV per 100, ठीक है, they are winning Hmm, like much less than what rake is taking from the table, sure. right? So per 100 the amount of money being taken by the rake is much more than 10 BB per 100. So even if you're winning 10 BB per 100, it's not like you're, like the biggest winner. The biggest winner is always rake. Got it, got it. Okay, but तो फिर ये गेम में फंडामेंटल फ्लॉ है, बिकॉज ये इक्विटी का ऐसा स्ट्रक्चर है, और आप लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज इवन विद स्किल वी कैन पुश इट टू 60-40, 65-35 मैक्स, चलो समझो ये. सो इज इट अ हाँ, नहीं. फ्लॉ विद द गेम कि यार, बिकॉज फ्लॉ हाउ विल द वेबसाइट मेक मनी? वो रेक से ही कमाएगी? नहीं, तो वेबसाइट कमा रही है ऑलरेडी, ठीक है. तो करेक्ट, करेक्ट. आप अगर आप देखो इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं, जी, दे आर मेकिंग, दे चार्ज मच लेस इन रेक. उनका रेक कैप होता है लाइक, यू नो लाइक जैसे 0.5 बिग ब्लाइंड 500 जूम पे, या ओके, ओके. मतलब, और मतलब हमारे यहाँ होता है लाइक 1 बिग वन ब्लाइंड से पॉइंट, ज्यादा, हाँ आई मतलब नो, वन मैं वो पॉइंट एक पढ़ रहा था समथिंग. आपका वो पोस्ट, तो उस पे आई थिंक समवेयर वाज सेइंग 1.4 बिग ब्लाइंड्स पर दिस थिंग हाँ, जा रहा था. सो हाँ, 1.4 बिग ब्लाइंड, मतलब जो हमारे हाईएस्ट स्टेक है उस पे 1.4 बिग ब्लाइंड है, और वहां पे मतलब जो उनके हाईएस्ट स्टेक है उस पे तो 0.2 बिग ब्लाइंड ऐसा कुछ भी होता है. ओके, 0.1 बिग ब्लाइंड, मतलब ओके, हमारी रेक उन लोगों से ऑलमोस्ट लाइक 8-10 गुना ज्यादा है, राइट? श्योर. तो मतलब नहीं, 8-10 गुना नहीं, पर एटलीस्ट लाइक 5 से 8 गुना, 5-6, सम 5-6 या टाइम्स, हाँ. 5-6 टाइम्स, राइट? तो मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि matlab rake is going to take that money, and you need to have more skill, and Hmm, people need to have, other people on your table need to have less skill. तो sure. उस वजह से your winnings become less, क्योंकि the amount of money, if rake was more reasonable, the amount of money you will win is much more, because yeah, एक बात तो like it is the truth कि like some people lose money, and the winners are the rake and the actual people who win, right? तो तुम्हें मतलब like basically if they like if you are losing, um, if people are losing and you are not winning much Hmm. because the rake is high, then it means the rake is winning more Correct. You are than getting a what it smaller should have percentage. won. Absolutely correct. हाँ, ठीक है. तो वही, that is the problem, and because of that it is not such a situation right now in India कि तुम्हारे पास um, you will make you will not make much money, but the websites these days, they have started doing things which will make sure that they win a bigger and bigger percentage, and the winners become less and less.
Got it. ठीक है. Is this like कि यार मतलब आप we are in the era of growing poker massively, hopefully you know और ज्यादा grow होगा. जैसे I remember Pokerbazi saying कि 250 CR का उनका last year का turnover था, where poker was about 80% of it, I believe, and 1 lakh active users थे monthly. Like you know overall this thing. So are we at a stage where if we grow this to 5 lakh, which is very possible in a country like India, you know, maybe over 5 years, we can grow revenue 5-6 times, 10 times also. So you're saying it's like आप वो golden जो duck जो golden egg देती है आप उसको अभी लेने की try कर रहे हो by charging a lot of rake. Is that what this thing is? Yeah, basically अगर site see तो yeah, people are competing not with each other but actually with the site. ठीक है, तो यहाँ पे we think that we are competing with that guy, this guy, he's a you know like somebody who's on our tables and we have to defeat him, but it's not like that. We are all competing with Ray. And the thing is कि for us to impact the game, we have to study, we have to learn, we have to do hard work for years. ठीक है. But for a site, they can just increase the rate and Correct. they can control the amount you win, the amount everybody else win, and the amount they win. Okay. So yeah, I mean that's one thing. Then second thing is if they are like in general, if the poker dream is not as profitable, if there are less people who win money from poker due to you know due to the high rate nature of the game, then, okay, then less people will come, right? I Correct. came into poker because I heard about you know like these guys like you know winning like good amount of money, like Phil Ivey, right? So right, if when those people like right now, if you see in the Indian field, if you see less and less people are winning in you know in games and you don't see as many winners, you don't see as many success stories, would you really invest your time? No, You would no, not be not at all. inspired, right? Not at You all. would Not think inspired this at all. is because people already think this is gambling. Matlab, Sure. like a lot of people already think that this is gambling. Correct. Many of my friends also think that it is not. But the thing is, if there are less and less winners, and there would be less people joining in the end, which would also mean that the sites in the end would be making less money. Correct, correct. Right? So I don't so think that's a basically जो right बोलते way हैं to go वॉल्यूम about बढ़ा it. के अब आपका इंक्रीज कर सकते हो, वैसे साइट्स को भी वॉल्यूम ऑफ प्लेयर्स बढ़ा के ही गेम बढ़ सकती है. दैट्स एब्सोल्युटली राइट, उनका भी बढ़ Yeah. सकता है. Okay, so let's come to reference. आपने I think you had posted a couple of articles in the month of September on Facebook groups and which was addressing the rake policy and also because बाजी ने काफी UI अच्छा बनाया है lately and they worked a lot on that. But there was this thing कि rake के ऊपर बहुत ज्यादा the thing was happening, and second was the turbo tables, which is also something there. Before we मैं उसके बारे में डेप्थ में बात करूं, उसके पहले ये है कि रेक समथिंग है जो जैसे जोमेटो चार्ज करता है रेस्टोरेंट्स को कि 30% मैं आपके रेस्टोरेंट के ऑर्डर पे लूंगा, वैसे ही वेबसाइट्स रेक चार्ज कर रही है. और उनको जब भी चाहिए वो आपको जोमेटो को पता चल गया कि खाली 2 ही वेबसाइट्स जोमेटो और स्विगी है, तो वो 10 से चालू किया था, 15 पे गए, 30 पे गए, 40 पे भी जा सकते हैं. रेस्टोरेंट्स के हाथ में भाई तेको आना है कि मत आ. तो डज दैट ऑल्सो हैपन कि यार साइट विल बी लाइक बॉस आई हैव क्रिएटेड अ गुड ऐप, मैंने आई एम ब्रिंगिंग इन सो मेनी रिक्रिएशनल प्लेयर्स बिकॉज मैंने शाहिद कपूर पे खर्चा किया है, मैंने ये किया है, मैं एवरी मंथ सपोज 20,000 नए लोगों को लेके आ रहा हूँ, हुआ डिपॉजिटिंग 1,000 रुपीज ईच, व्हाटएवर, आई एम ब्रिंगिंग इन सच अ अमाउंट ऑफ पूल इनटू दिस थिंग सो दैट क्रशर्स कैन बीट देम दिस दैट. तो आई वांट टू इंक्रीज द रेक यार, मतलब मुझे ये करना है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि दे विल से कि हम लोग पोकर ग्रो कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द पूल साइज फॉर यू आल्सो, so we are allowed to do it. Like what if they openly come and tell you this, like I'm just yeah, I understand your question. तो मैं इस पे पहली चीज तो ये है कि they are not doing it for us. Correct. If I open a business, if I run a business, I'm not doing it for like the benefit of my customers most of the time. I'm doing it for my own benefit because I want to make money. Unless it is a charitable organization, तो फिर अलग बात है, right? Correct. तो वो जो गेम ग्रो कर रहे हैं, शाहिद कपूर को पैसा दे रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, that is not because of so that we can make more money. ठीक है? That is because they can make more money. ठीक है? Now all we are saying is कि अगर if you are you know like bringing in more customers, if you are bringing in more people who deposit and play on your site, and your traffic increases, the amount of money you will make will anyway increase anyway. Correct. Like you're going to make more money because there are more tables running. More tables means more rake, right?
Now, what we are saying is, why are you changing the rules of the game? Because the rules of the game till now was कि इतनी इतनी rake है, ठीक है? Correct. Based on that, like for example, myself. So I quit my job knowing that this is, I saw over a year how much money I made. I estimated कि ठीक है मैं इतना तो इतना कमा सकता हूँ. I quit my job. I quit a like career thinking that this will be better. Now a site they can just remove Overnight. Correct. yeah, overnight they can change my destiny, right? My and several other people, like with me there is at least like I can go back to doing what I was, but there are some people like young guys who are like 22, 23 who like don't have anything else, right? Sure. So unke liye to like game has like will if it becomes unprofitable 2 years from now, what are they going to do? Right. So I just want to say that this argument that they are doing for us is not valid. And secondly, like they are going to make more money anyway. Do not change the rake system. Do ये not कितना था impact it. रेक? पहले कितना रेक था और अभी अगर आप अभी आई डोंट नो व्हाट इज, आई नो हर एक टेबल पे अलग रहता है, हर एक स्टेक्स पे थोड़ा अलग रहता है, बट स्टिल एवरेज अगर 5 पकड़ते हैं अभी तो पहले कितना था? व्हाट इज द चेंज बीन? तो change, I can tell you कि अब जो problem थी, like the issue that I brought up 100 बीबी एंड 75 बीबी का जो है वो तो आई एम हाँ, कमिंग ऑन दैट. हाँ, वो तो सेपरेट टर्बो टेबल्स का इशू हो गया. तो ये रेक ओवरऑल इंक्रीज हुआ है? हाँ नहीं, जो यहाँ पे दो चीजें, एक तो नॉमिनल रेक है. नॉमिनल रेक वुड बी कि इफ द साइट सेज कि 5% हमारी साइट पे रेक है और हमारा रेक कैप इतना है, ठीक है? करेक्ट. तो वो दैट इज द नॉमिनल रेक, ठीक है? दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड ऑन बाजी. Okay. आई एम नॉट सेइंग, आई हैव नॉट क्लेम्ड that has been changed. Sure, yeah, correct. But there is also effective rake. तो अगर if I decrease your ability to win something beyond the rake cap, तो जैसे मतलब we can ठीक है, go for it. आपका वो 100 बीबी वाला ही. So आपका कोका कोला का एग्जांपल आपको रेफर करना है? हाँ नहीं, I will share a like okay, let me just explain it this way. तो अगर मैंने if I make 100 BB, ठीक है? Correct. And the rake cap gets hit at 37 BB, ठीक है? Correct. ठीक है? तो this was the example that was given by Rajat. He said that the rake cap gets hits at 37 BB. 37 BB, right? So I'll just post it on this thing here for everyone to read when we edit it, but you can please talk about it for sure. Okay, yeah. So वो he said कि इसमें इतना इतना था, and then we responded कि before when you had 100 BB tables, we could win 37. Anything after 37 BB is rake free. जीत सकते थे 63 BB rake free. 63 BB is rake free, but now you have taken away that ability and you're only allowing us to win 38 BB rake free, which means that the 25 BB that was going to be rake free is now going to be raked in another pot. Sure. You understand what is happening? So I understand. Correct. 25 big blind मेरे पास आ जाता, मेरे वो एक साथ ही आपने पूरा 10,000 रुपए का स्टैक ले लिया होता. सपोज अगर आप 50-100 खेल रहे हो तो अभी आपको बाद में वो 2500 रुपए वापस अगले पॉट में जाएगा और वापस वो रेक उस पे वापस लगेगा, वो फिर से रेक होगा, ठीक है? तो मतलब that is my problem कि you have effectively increased the rake by reducing my ability to win after the rake cap gets hit, ठीक है? Sure, but अभी इस पे just to understand, अगर आपने आप 100 बीबी टेबल पे खेल रहे हो तो आपको तो पूरा मिलेगा, राइट? अगर आप अभी भी 100 बिग जो नॉर्मल टेबल पे खेलोगे तो मिलेगा, राइट? तो आपको तो भी नॉर्मल चलेगा, राइट? क्या? हाँ. तो the problem is with the turbo tables, and I see, so I'm just going to like read out this thing कि when you go to market and buy 2 Coca-Cola bottles, कैशियर ने 2 बॉटल का पैसा लिया बट एक ही बॉटल का आपको मिला एक्चुअली. तो यही हो गया कि अगर आप 75 बीबी पे ऑल इन चले गए तो आपको मिलेगा वही 75, मतलब आपको डेवलप मिलेगा, बट आप 100 बीबी पे गए तो आपको 10,000 रुपीज मिलेगा और उस पे 7,500 रुपीज मिलेगा. तो बट बाजी विल चार्ज द सेम रेक ऑफ 1,000 रुपीज इवन ऑन 75 बीबी वाला एंड 1,000 रुपीज ऑन 100 बीबी वाला. ये चीज मुझे एंड दैट्स व्हाई बाजी हैज इंक्रीज द रेक बाय 40%. ये मैंने यहाँ एडिट करके दिखा देंगे. मुझे खाली इसमें ये पर्सनली समझ में नहीं आया, अगर 100 बीबी दोनों ऑल इन चले गए 20,000 रुपीज का पॉट हो गया और 5% सपोज ये है अज्यूमिंग, तो उनको 1,000 रुपया मिल गया. इज व्हाट दिस थिंग इज 1,000 रुपीज का
100 बीबी ऑल इन पे 5% 1000 रुपीज का बाजी को मिल गया। अगर 75 बीबी मतलब 150 बीबी का पॉट हो गया, दो लोग ऑल इन गए, तो उसका 5% तो 750 होता है ना, तो दोनों में 1000 रेक कैसे जा रहा है? नहीं, तो इसमें 5% विद द रेक कैप, ठीक है। करेक्ट, तो हाँ। अगर आपके पास मतलब आई डोंट हैव अ डायग्राम राइट नाउ टू शो, श्योर। बट बेसिकली ऐसा होगा कि जैसे इफ यू लुक एट द एग्जांपल जो मैंने इन माय सेकंड उसमें दिया था, ओके। इन माय सेकंड पोस्ट, तो यू सी कि आप 50-100 पे यू आर पेइंग 5 बिग ब्लाइंड टू विन अ पॉट ऑफ 75 बीबी, ठीक है। मतलब हाँ, 75 बिग ब्लाइंड आप विन करने के लिए, मतलब 150 बिग ब्लाइंड के पॉट में आप 5 बिग ब्लाइंड दे रहे हो, और आप 200 बिग ब्लाइंड के पॉट में, मतलब 100 बिग ब्लाइंड विन करने के लिए भी आप 5 बिग ब्लाइंड दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे द थिंग इज कि जब आप सेम प्राइस दे रहे हो कम पैसा जीतने के लिए, करेक्ट। तो दो आपके ऑड्स खराब हो गए, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और बाजी के जो ऑड्स हैं वो वो इंप्रूव इम्प्रूव हो होगा। गए, क्योंकि जी, वो जो जो डिफरेंस है उसको वो फिर से रेक कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो जो 50 बिग ब्लाइंड का डिफरेंस है उसको वो नेक्स्ट टाइम फिर से रेक करेंगे, मतलब 50 बिग ब्लाइंड नहीं बट हाँ, 25 बिग ब्लाइंड मेरा इफेक्टिवली, कंफ्यूजन खाली इधर ही है कि दोनों में सेम रेक कैसे आ रहा है, 5 बीबी कैसे आ रहा है, वो क्योंकि खाली। हाँ, वो रेक मैथ्स कैप आप बता हिट, सकते हो? हाँ, हाँ जो जैसे क्या होता है कि 5% रेक कैप होता है, ठीक है। हाँ हाँ। और सॉरी 5% रेक परसेंटेज होता है कितना, ठीक है। उसके बाद रेक कैप कब हिट होगा, ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट रेक कैप हिट होने के बाद वंस द रेक कैप 5% अप टू द रेक कैप, दिस इज द आइडिया। तो करेक्ट। अगर मेरा रेक कैप है 5 बिग ब्लाइंड, ठीक है, हाँ और मेरा पॉट है 100 बिग ब्लाइंड का, ठीक है। हाँ तो 100 बिग ब्लाइंड में मेरा रेक कैप हिट हो गया। अब 100 बिग ब्लाइंड के ऊपर मैं जितना भी जीता, हाँ, नाउ आई वो अंडरस्टूड। वो पूरा रेक फ्री है। सो व्हाट तो आर अब मैं टेलिंग मी अगर, के रेक बैक तो 37 बीबी पे हिट हो ही जाता है इन बोथ द दिस थिंग्स हाँ, सिनेरियोस। नहीं नहीं, इसमें अगर 50-100 का एग्जांपल लो, जो रजत ने एग्जांपल दिया था वो 500,000 का, हाँ, 500,000 करेक्ट स्टेक्स का करेक्ट। दिया था। हाँ ये जो है अगर 50-100 का अपन एग्जांपल लें, तो हाँ 5% जो हमारा वो है वो हिट होगा 100 बिग ब्लाइंड के पॉट पे। 100 करेक्ट बिग ब्लाइंड विनिंग्स नहीं, 100 बिग ब्लाइंड का पॉट, बिकॉज दे करेक्ट। चार्ज मनी फ्रॉम द पॉट, ठीक है। तो श्योर। 5% 100 बिग ब्लाइंड का हो गया 5 बिग ब्लाइंड। करेक्ट। अब इफ यू विन 200 बिग ब्लाइंड, श्योर। what happens, you get charged only 5 big blind. It करेक्ट। doesn't matter whether you get whether you win 100 big blind or 200 big blind or 400 big blind, you will be charged only 5 big blind, 100 बीबी रेक कैप, हाँ है करेक्ट ना, because 100 bb पे rake cap hit हो गया। करेक्ट करेक्ट। अब what Bazi has done is that they have reduced the size of the sorry the stack size on the new turbo tables. So the pots will be smaller, the pots that you win will be smaller. So now like the maximum pot you will win is 150 big blind pot. एंड स्टिल आपका रेक कैप 100 बीबी पे हिट हो गया, तो वो पांच हाँ, तो लग ही उन्होंने गया, तो वही आपका ऐसे उन्होंने सेम हो गया, अभी मैं समझा। वही तो उनको, इफ दे एक्चुअली वांटेड टू बी ऑनेस्ट विद इट, तो इफ उसको 80 बीबी करो। तो उनको जो भी उसको एडजस्ट करो कि वो रेक कैप जो है वो आप रिड्यूस करो, भले ही 5% रखो लेकिन रेक कैप रिड्यूस करो, ताकि वो 70 बीबी या 60 बीबी या 80 बीबी जो जो भी भी हो, नंबर हाँ, आता है व्हाटएवर द राइट उस, मैथ इज। हाँ, हाँ, वॉट एवर द राइट मैथ इज, उस नंबर पे हिट हो, एंड गॉट इट। आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू, पीपल डोंट हैव टू पे। Understood, understood. So if we just talk first being fair wise, what you're saying is get that rake cap down on your turbo tables firstly. And डेफिनेटली if इफ यू that डोंट, happens, then it या, works out. if they, I don't have a problem with turbo tables if somebody, like, you know, in the sense ki, like, if the time bank is limited, turbo tables I think was done on the pretext that people don't like to wait, recreationists don't want to wait, they are single tabling, so they want action to happen quickly. I think that was what the reasoning was. तो Faster ठीक है, action, absolutely faster correct. action है, ठीक है, I don't have a problem with that. But what my problem is that why can't you keep a turbo table which has the same 100 big blind? uh you know, stacks are the same, just the time bank is limited, Sure. and you have to take faster actions if you actually wanted to generally introduce turbo tables, because that also helps Bazi, if you understand it, if you think about it, the number of hands, if they increase per hour, Correct. that means the Absolutely. rake increases also.
Correct. So I don't have a problem with that, because this will be the same as say Zoom on pokerstars.com, right? You're playing many more hands per hour, so you're Sure. getting raked much more. That's fine with me. But yahan pe, if you're not doing that, if you're like, I don't understand why you have to keep it 75 big blind. Like that's like, if it is a turbo table, why do you need to keep it to 75 big Sure. blind? What sites, what if they say that players को deep stack नहीं बैठना है, मतलब जो बंदे ने 5,000 डिपॉजिट किया है उसको एक साथ इतना लेके नहीं बैठना है, उसको 70 भी फुल स्टैक, या फिर एक्चुअली तो इट वाज 50 बीबी राइट व्हेन वी हैड वो स्टार्टेड ऑफ. वो कितने भी स्टैक के साथ बैठ सकता है ना. ही कैन प्ले अ लोअर स्टेक ऑल्सो. तो अगर आपको लाइक इफ somebody wants to come and try his luck with 20 big blind, right? He can already do that on 100 BB table. Sure. Why do you have to reduce it by 5 big blind so that he can try his luck with 15 big blind? Like, I don't understand what is the strategic difference. मतलब क्या strategy change हो गई 5 big blind में? Got it. एक ही strategy change हुई, वो ये है रेक कि बढ़ अब गया. आपको रेक ज्यादा मिलेगी. मतलब Got it. और कोई लाइक प्लेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज द पर्सन who is already playing an inferior strategy, क्योंकि because if you're playing करेक्ट. short stack, बीआर नहीं है और कुछ नहीं, आप हाँ, ऐसे ही if खेल रहे you're हो बड़े वही स्टेक तो पे. मतलब like 20 big blind poker or short stack poker is not, if you see any of the like the best players in the world, they try to play as deep as possible, right? Or like at least like 100 or 200 big करेक्ट. blind deep or एब्सोल्युटली. whatever. एब्सोल्युटली. Nobody wants to play like 30 BB deep, 20 BB deep, right? करेक्ट. So that the reason is that because you get raked more as a percentage of the pot, so you will lose more money to rake. It's not like he, Why, if sorry, it is why does this happen? Why do you get raked more as a percentage of the pot? Because आपका वो कैप हिट नहीं होता है रेक तो. कैप हाँ. रेक कैप हिट नहीं होता है, तो रेक करेक्ट. कैप के बाद जो फ्री पैसा मिलता है करेक्ट. वो करेक्ट. वो आपको कैप नहीं हिट नहीं होएगा. मिलेगा, करेक्ट. है ना? तो और उसमें लाइक इट्स आल्सो ट्रिवियल, बिकॉज जैसे कि अगर आप सोचो टूर्नामेंट में हम खेल रहे हैं, तो टूर्नामेंट में अगर मैं स्मॉल ब्लाइंड हूं और एवरीबॉडी फोल्ड्स, इट कम्स टू मी और आई हैव 10 बिग ब्लाइंड, मेरे पास 10 बिग ब्लाइंड है, करेक्ट. ठीक है? वहां पे मेरी जो लाइक बेस्ट स्ट्रेटजी दैट देयर इज, मतलब इफ आई एम नॉट इन लाइक आईसीएम एंड स्टफ, तो मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी है आई हैव टू गो ऑल इन विद अ जैम. लार्ज परसेंटेज ऑफ करेक्ट. माय हैंड, ठीक करेक्ट. है? आई हैव टू जैम विद अ लार्ज परसेंटेज ऑफ श्योर. माय हैंड्स. और वो स्ट्रेटजी डजंट अप्लाई व्हेन यू हैव 100 बिग ब्लाइंड्स फॉर एग्जांपल, राइट? करेक्ट. तो what happens is in यू आर tournaments, प्रमोटिंग ऑल इन जाने लगेगा आपका कैश in में भी. tournaments it is different, because in tournaments you are not raked every करेक्ट. time you go all in. But in cash games, because recreationals do not understand this, that every time they go all in, a share of their pot will go to rake, and they will be left with less and less money. तो जैसे कि हमारा जो like ये poker players union का जो सर्वर है श्योर. डिस्कॉर्ड पे, श्योर. उस पे like somebody was telling that he played heads up with some like guy with 15 big blinds, and within 25 hands, not only the guy with 15 big blinds had lost all his money to rake, even this guy also lost some money to rake. श्योर. मतलब इन 25 हैंड में रेक ने like more than 15 बिग ब्लाइंड, जो उस गाय का उस लड़के का जो स्टैक था, उससे ज्यादा रेक को चला गया, right? श्योर. So it is like an inferior strategy. You cannot play a strategy which is like designed for 25 hands of heads up, Got right? it. Got it. नहीं, fair enough. And is this something which is happening with all the sites right now? Like ये जो 5% is not the problem, right? आपका problem turbo tables के साथ problem है, right? Is the problem बहुत सारी साइट्स ने ऐसा कर रखा है. मैंने कुछ साइट्स देखी हैं जिन पे कि 10 बीबी का शॉर्ट स्टैक का ऑल इन का मतलब सिर्फ 10 बीबी टेबल्स हैं. but that is something like जो N8 के पास भी है, right? कि just N8 all in चले जाओ और N8 खेलो does it differently. So N8 charges first a hand rake. all in, something like that, हाँ. N8 charges a rake one time. They don't charge rake Repeat. again and again. Okay. Every time you go all in, they don't charge In rake. the short stacks, in the short stack tables. हाँ, जो all in और fold उनका जो है हाँ, N8 हाँ. या GG का, उस पे हाँ. they charge rake one time like tournaments. पर They उसमें तो don't डबल charge. होएगा ही नहीं ना, क्योंकि एक ही बंद बचेगा, राइट? अगर 8 लोग हैं तो 7 लोग ऑल इन, 8 लोग ऑल इन चलेगा तो नहीं एक ही नहीं, table उसमें ऐसा होता है कि 4 लोग जो हैं, जैसे हाँ. if they are going all in, ठीक है? तो if somebody you go all in with one guy, you win or he wins, whatever, right? तो like you don't get raked every time. You just get Okay. raked, मतलब with that money if you go all in again, जो तुम्हारे हाँ. पास 4 है, उसके पास समझ उससे गया, अगर समझ तुम फिर गया. all in जाओगे, हाँ. तो तुमको रेक नहीं करेंगे वो. Okay. They will rake you one time. Okay. So yeah, ऐसा. perfect.
ठीक है. So ठीक है, I think we've addressed the fact कि turbo tables पे क्या करना है, and like is that something which we are looking at, and like because कि यार अगर ये इस पे थोड़ा वो ला सके, we can bring down the rake cap. This thing is what the right solution is going forward. I think what's the solution, like, because there is a poker players union, right? I know that right now. So what is the ask there? Our solution is simple. We want 75 BB tables to be stopped, in the sense that you have to bring it to 100 BB, and if you want to reduce the time bank, keep it fast action, that's fine with me, no problems with that. But having 75 BB tables makes no sense, because it's only designed to help the site. It's not designed to help any of the players that are playing, because if nobody in the world who's winning is actually playing with short stacks, who's a winning player over a large sample is playing with short stacks, I don't know if there is anyone. I haven't seen anybody in Indian fields who has done that successfully. So it means that cannot happen. The only thing you're doing is you're helping your people who are not aware, especially like new players in the game. You're sort of exploiting them. मतलब इट्स प्रेडेटरी बिहेवियर, मतलब जैसे कि वो होता है ना कि लोगों को जैसे फोन खरीदने के लिए बोलते हैं कि वी विल गेट यू अ लोन, ठीक है, तो ले लो फोन ले लो एंड वी विल गेट यू अ लोन, एंड पीपल हु डोंट नो इनफ वो उनको ऐसा लोन देते हैं जिसकी की इंस्टॉलमेंट्स इतनी मतलब लाइक जिसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, राइट? तो दैट इज द सेम थिंग इन पोकर व्हिच इज हैपनिंग. आई थिंक इट्स प्रेडेटरी बिहेवियर. Sites are just trying to, instead of working on spreading the game, bringing more players in, increasing your revenue that way, they are increasing their revenue by actually rinsing the players they already have. Sure. Right? ऐसा होता है because all the, like, when I say celebrity poker players या famous poker players, because tournaments make you famous, right? Cash games don't make you very famous. वो एक होता ही, right? Because everyday poker group है, आपको ये इसने 8 लाख जीता, 10 लाख जीता, ये IPC टाइटल जीता, ये जीता, वो हो जाता है. So those players are mostly tournament players, is it? Are the most regs on the famous side more of MTT players? So उनको ये फर्क पड़ता है ये चीज से कि नहीं पड़ता है? नहीं, उन लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रेक कैप जो है वो तो टूर्नामेंट बाइन के हिसाब से, तो हाँ, मतलब पर वो 10% से ज्यादा नहीं होती है. करेक्ट, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज लाइक 10% और लेस देन 10%. अगर जैसे कि 25,000 रुपए का टूर्नामेंट है तो साइट में नॉट चार्ज, साइट 2,500 भी चार्ज नहीं करेंगे, लाइक 1,750 समथिंग लाइक दैट. तो इट्स लाइक द मैक्स इज 10%, राइट? तो उनको 10% ही रेक देना है. दैट इज देयर बेनिफिट. दे कैन so these things don't impact them. These things don't impact them, but I'm asking you, like, if cash games die tomorrow or like become, then tournaments won't happen. What do you think the sites will do next? They will increase the tournament rake, right? Sure. Because right now ऐसा होता है ना कि there is a global standard tournaments के लिए, ठीक है? तो टूर्नामेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड है कि 10% रेक चार्ज करेंगे अक्रॉस द बोर्ड. ऑल द मेजर साइट्स ओनली चार्ज 10%. तो नोबडी मेसेस विद इट. बट बिकॉज कैश गेम्स का ऐसा जो है, साइट्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग रख रखा है. तो like Indian sites, what they're doing is they are going one step ahead. They are introducing all this like short tables and like 10 BB tables to like like sort of take milk it more money और मिल्क करने का. ठीक है, मैं एक टॉपिक पे आता हूँ, रेक बैक का. तो अभी साइट ने जो 5% कमाया, लेट्स गो 5%. अभी तक मुझे ये डिस्कशन से ये पता चला है नहीं, 5% तो नहीं कमाया साइट ने, 50 to 70% पैसा कमाया. मतलब बिकॉज वो आप बोल रहे हो कांस्टेंट रोटेशन के कारण. हाँ, आप अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट देयर, राइट? द प्रॉब्लम इज नॉट देयर. वो तो होते रहेगा. प्रॉब्लम अपना ये है कि आप that's not the problem. That is the nature of poker. So I don't have a problem with that कि constant rotation, मतलब पैसा बार बार wager हो रहा है, बार बार bet कर रहे हैं. No problem. So we have two problems identified कि बॉस, एक तो यार ये short tables के ऊपर आपका rake cap वही है, तो मेरा वो जो अपने 75 और 100 BB वाला डिस्कशन था. एंड दूसरा ये है कि short tables होने ही नहीं चाहिए 75 BB वाले, because players are getting exploited. New players are getting exploited. This is the two problems we have. And coming to जो whatever, तो 50% कमाया साइट ने, 70% कमाया इवेंचुअली वही वेजर्ड गेम पे. जो रेक बैक देते हैं, ये जो चीज है, अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द साइट पर्सपेक्टिव, ये
वो तो उनको देने का कोई जरूरत नहीं है, राइट? इट्स लाइक अ कैशबैक दैट दे आर गिविंग, इज इट? लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, if they don't do it, it's more like an offer from their end कि so that people come and play on my side. मैं 7 करोड़ का दे रहा हूँ एक महीने में, मैं 2 करोड़ का दे रहा हूँ, so everyone has their own this thing. So isn't that good? I'm just trying to understand. तो वो एक अच्छी चीज है कि नहीं? तो अगर इतना रेक ले रहे हैं, अगर आपका वो कर रहे हैं, बट रेक बैक हमेशा एवरी मंथ बढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है कि नहीं है? तो और उसमें एक फायदा कैसे होता है? उसके बारे में भी आई विल टेल यू, like there's a misconception which I will clear, but first I will address this point कि जो if you are a profitable poker player, ठीक है, for many people rake back forms a big part of their winnings, because one thing, like winning in a month is not assured. matlab I don't Sure. like, I know the best players in India, like even they have swings so violent that they are not able to win every month. Correct. So Absolutely. one thing that is assured is rake back. So for many grinders, rake back forms like at least 20 to 30% of their winnings. ठीक है, मतलब over the course of 1 year or 2 year, whatever. So if you are reducing that, so you're like taking away something that people rely on. अब ये बात सही है कि the site doesn't have to do it, हाँ, मैं because वही पूछ रहा हूँ. हाँ, मतलब it's not in the rules, they don't have to do it. Definitely I'm मतलब legally and even like morally I don't think they have an It's like a obligation to cashback do that. offer types, right? हाँ, मतलब ये है कि तुम हमारे यहाँ खेलो तो हम तुम्हें थोड़ा पैसा वापस Correct. देंगे, but the thing is कि like people rely on it because it has implicitly become a part of your winning. Yeah, it is a norm, matlab, because every site does it, so it has become a norm, and you sort of count that sort of money when you are thinking about your earnings Even in over a the bad course month of a year. ये वाला आ ही जाएगा. हाँ, ये वाला आ ही जाएगा, right? तो वो अगर if that is impacted, if that is reduced, then it reduces like the overall profitability. So that is growing, right? तो ये sites वो तो grow कर रही है. तो is it that because मैंने यहाँ से ज्यादा रेक आ गया, टर्बो से ज्यादा कमाया suppose, तो यहाँ आपका लेकिन जो मंथली लीडर बोर्ड है और जो कैश रेक बैक है वो तो भाई 3 करोड़ था 6 महीने पहले, आज 7 करोड़ हो गया, ऐसा कुछ है? हाँ, आई विल टेल यू वन थिंग. तो ये रेक बैक जो था, जो कैश लीडर बोर्ड था, ये था 3.5 करोड़ एक टाइम पे. आई थिंक आज से 5-6 महीने पहले जब पहला कैश रॉयल आया था, समथिंग लाइक बिफोर दैट कैश स्मैश, तो 3.5 करोड़ था. देन नाउ इट इज लाइक 7 करोड़. ठीक है. एंड इफ यू लाइक, यू वोंट बिलीव इट, बट आई मेड more money per 100 in rake back at that time than today. Because more winners right now? Yeah, क्योंकि उन्होंने ये किया कि पहले लीडर बोर्ड में 15 लोग जीतते थे, now 35 people are winning. So it is also, you have to understand, this is all, everything that a poker site does is a grand scheme to keep money in the system. Because अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा पैसा दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो विड्रॉ कर लेगा. अगर तुम किसी को for winning the leaderboard, if somebody gets 5,000 rupees, he will withdraw it. But if you only give him 1,500 rupees, he will think कि अरे यार चलो स्पेंड कर लेता हूँ, हाँ चलो इसको अपन उसमें मूव करके लाइक फिर से इससे खेल लेते हैं, राइट? तो मतलब that's how things work. So they don't want winners, they don't want people to make too much money. The more money stays in the system, the more opportunity they have कि इस पैसे को फिर से रेक करेंगे. ठीक है. तो उनके रिवॉर्ड्स उन्होंने इतने स्प्रेड थिन कर दिए हैं इस समय, लाइक स्पेशली बाजी में, कि कोई एक्चुअली कुछ जीत नहीं रहा है. लास्ट महीने जो मैंने लाइक दिया लाइक अराउंड 4.5 लाख रुपीज इन रेक. Wow. And I won in leaderboards around like 45,000 rupees. So that's 10% rake. 10% to 11% rake back. And that is like laughable, because it's a huge joke, right? So matlab, I don't know like what to say, because and this is happening because they have changed the system, and previously it used to be 25 to 30%. Sure. For most players. Now it is like less than 20, definitely. matlab. So that is the story with rake back. So उसमें क्या होता है? उसमें what is the solution there? मतलब वो क्या है? You again, it's के leader winners कम रखो, but then वो spread out नहीं होएगा money. And also जो recreationals खेल रहे हैं, जो उनको suppose किसी ने 8,000 10,000 रुपए हारा, उसको वापस 1,500 रुपया मिल जाता है,
तो वो उसको हाँ नहीं मिलेगा, राइट? मतलब फिर वो नहीं होएगा, तो वो हाँ तो what is the story there? Like, what do you do there? Like what तो is the PPU asking for? solution. Poker Players Union, yeah. I think like solution, like either of the two things, either introduce a decent rakeback program. Do not rely on leaderboards for rakeback. Because leaderboards should supplement rakeback. Sure, They sure, should not be a primary rakeback offering. ठीक है. sure. तो अगर if there is a volume based rakeback program, जो कि अगर मैं ज्यादा टेबल चलाऊंगा, because what we also don't understand is कि अगर there is a reg and then there are like like say there are like 10 guys, ठीक है, 4 of them are regulars and 6 of them are recreationals, ठीक है. So those 4 guys will play like 4 or 5 tables, right? So they will run more tables and Correct, one recreational will play on each of those tables, right? correct. तो वहां पे 5 टेबल चल रही हैं बिकॉज ऑफ दोज 4 रेक्स. अगर वो 4 रेक नहीं खेलेंगे तो एक ही टेबल चलेगी. तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द साइट टू हैव वॉल्यूम बेस्ड रिवॉर्ड्स, ठीक है. मतलब इफ दे वांट टू, So जो rewards 1.0 और अभी 2.0 की मांग है, वो वाला टाइप का, is it? yeah, I mean it like you should have a decent rakeback program that offers you somewhere like from, I would say, 20 to 40%, something that you can shoot for, right? Okay, but is okay. So coming to a touchy topic of rake back deals, तो वो होता है क्या? Because वो जो चीज थी काफी, अगर आप जैसे regs हैं जो who are contributing so much money to the site, right? If you're generating 4.5 lakhs of business for a site, it's pretty good. So what happens on the rake back deals, and I why think can't I why can't players like you who are so high volume generating just चुपचाप rake back deal करके खत्म so करना, ये होने I देना? think many players are doing that. So अच्छा, like if you see like lot of, not everybody speaks up, हाँ मैं वही, हाँ, because they are getting some deals. Secondly, also what happens is ki, like Bazi right now has created a situation in which that they have gained so much of the market share कि अब like तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस ज्यादा नहीं है. मतलब तुम MPL has like very good cash action, isn't it? बहुत ज्यादा cash action है एमपीएल MPL में पे. भी सेम स्टोरी है. like वहां के जो like मिनिमम स्टैक्स हैं, जो like वो रेक आई है. थिंक वापस थोड़ा टर्बो की तरफ मूव हुआ है, बट एमपीएल हैज गुड एक्शन, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जस्ट टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सो देयर इज कंपीटिंग, हाँ इट्स नॉट दैट कंप्लीट मार्केट शेयर इज देयर. नहीं, but like if you consider the sites like the mainstream sites like हाँ, Adda 52, हाँ, हाँ, if you consider Poker श्योर, द कोर Stars, वंस, हाँ, right? If even if you consider Spartan, जहाँ श्योर, पे कि पहला थोड़ा बहुत कैश होता था, आजकल बहुत कम है. करेक्ट, तो like all these major sites which have been like a mainstay for a long time, वो sites पे action बहुत कम हो हाँ, रहा है. हाँ, मतलब हाँ, considerably like year on year like करेक्ट, action कम हो रहा है. और वो सारे जो customers हैं, जो वो सारे players हैं, वो बाजी पे जा रहे हैं. ठीक है. तो बाजी has created a situation in which, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर टाइप्स, yeah, they are one of the major players, right? श्योर. मतलब you are right in saying MPL is an option, but like MPL के साथ अलग करेक्ट, दूसरी problems हैं, right? So श्योर. people don't want to play there, but वही बात है. तो because of this, तुम्हें अगर वो रेक बैक नहीं भी देंगे तो क्या कर लोगे तुम? आई अंडरस्टैंड, सो बेसिकली वो बिहेवियर वैसा वाला, गॉट ये इट. वैसे ही हो गया कि लाइक मार्केट में आए, सबको फ्री में चीजें दी, फ्री टिकट्स दिए, रेक बैक ऑफर्स दिए, लीडर बोर्ड के प्राइसेस अच्छे दिए, सब कुछ दिया. अब जब तुम्हारा लाइक मार्केट शेयर आ गया, जब दूसरी साइट्स पे तो सर्च प्लेयर्स बचे प्राइसिंग ही नहीं चालू खेलने हो वाले, गई है, तो सर्च तो प्राइसिंग. हाँ, सर्च प्राइसिंग तुमने चालू कर दी. तुमने लाइक जस्ट यू नो दे कैन नॉट डू एनीथिंग बेसिकली. Okay, I think we are done with the core rake ka topic, and what the thing is, if there is anything that you want to add from your bit, because I think मेरे को जो cover करना था, rake back, the kind of turbo tables and this thing I have covered. Is there anything specific that you want to address? I think yeah, we covered most of the things. मुझे एक चीज like we talked about like short stacks, but I will talk about like something related to that, right? So Sure. if you see on like PokerStars India, and like PokerStars India follows like whatever is done on PokerStars.com, so whatever is international Sure. standard. So they like their minimum stacks is 40 big blinds. ठीक है. Okay. So even though like the games are much tougher there, मतलब if you Sure. like
talk to most regs and also most players who No, you will asked say, me also. My opinion was the same because when I got yeah, an option to shift that time, I said पोकर स्टार में जो 510 और 1025 में मुझे मिल रहा है वो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कंपेयर टू मेरे को जो दूसरे साइट्स पे मिल रहा है तो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड शिफ्टेड आउट कंप्लीटली right, एंड या सो एंड बाजी आई हैड पुट अ लॉट ऑफ माय एक्शन then realized के and something happened. It was not because I understood rake and short stack and all, but turbo आने के बाद मुझे लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है. So yeah, fair enough. So yeah, go on please. तो मतलब even though games are tougher, Yeah. but because the rake is the most reasonable, and they don't have this funny business of like 15 big blind, 20 big blind short stacks. Sure. उनके short stacks 40 big blind है. तो उससे ये होता है कि like वहां पे win rates जो हैं, like ironically वहां पे people are winning more and people are losing on bazi. मतलब I know like multiple people who are actually winning on stars over a large sample and actually not winning or winning like little bit on bazi. Sure. ठीक है, तो we don't see the effects of it. We will say, oh, there are a lot more recreationals on bazi than on stars, but this is how big the impact rake can have. You know, if you, I'm sure like if you can analyze like a sample of 5 million hands on both sides on the same stack, you will see ki like there is much more going to rake in on like bazi than compared to poker stars. And that's why on poker stars, even though the games are tougher, the regs are like winning decent amount ऐसा. Sure, but I think ये constant चलते ही रह रहा है ना, because वहां भी कभी ये same story like the rake thing goes up, or does that happen or does that not happen? Like you don't वहां face it पे that way? Because I rate, remember 3-4 महीने पहले वहां भी कुछ उन्होंने तो ऐसा बढ़ाया था. था, उन्होंने Yeah. बढ़ाया था, पर उनका पहले और भी कम था. तो Okay. बढ़ाया उन्होंने, but it's still very reasonable. And see, they are the only site who are not going to do who are going Turbo to का like आपको चाहिए, ये short जो stack कि नहीं हो मतलब जाएगा. short stack करेंगे या 10 big blind का game या कभी like they will not do these things because you know like Internationally controlled है. poker stars का नाम associated है उस चीज से, तो they are not going to do. So anyway, so I think like other sites should also sort of like follow what they're doing, and you know like they have been in the game for like 20 years, more than 20 years, so they know what they're doing, right? So matlab like let's not exploit people who don't understand how rake is impacting them. And you know like let's keep the game so that there are winners and more people join looking at those winners. Absolutely. Yeah. Perfect. I think so. That is Suvigya from PPU. I just like Poker Players Union. यार वो बहुत सही है. Like you know there is a group in poker which is kind of together to say कि यार जो चीजें अच्छी है नहीं है. And thank you so much, Suvigya. I had a detailed conversation. मुझे I had one thing in my mind. मैं भी भूल रहा हूँ क्या था. I wanted to just wrap with that. But ठीक है. We had a detailed conversation. Very nice. मुझे भी काफी structures खुल के मिले. Like you know in मेरे this thing, and even if people like me who are going to watch this, उनको भी काफी you know mind open होगा कि क्या exactly कैसे impact हो रहा है ये चीजों का. So thank you so much, Suvigya. Thank you so much. I hope I would say like I would encourage, if anybody is watching this, I would encourage them to join like our Poker Players Union. And we like if we are a large group who like is on the same page, then these websites like they would sort of be discouraged from you know making the game unprofitable for us even today and like in coming like months and years, right? Because these changes are happening for sure, and we need to be like you know stand together if we want to fight them. Perfect. So yeah. And yeah, it was nice like talking to you. Like I hope मेरे questions बहुत ज़्यादा amateur नहीं थे आपके लिए, but नहीं, like all your questions were very reasonable. और फिर definitely like I think like anybody who watches it like try to stick with it, because I know it can get a bit like windy at times. Our conversation मतलब follow करना मुश्किल हो जाता है, but yeah. So yeah, thanks for having me. ठीक है, thank you so much, Suvigya. Good luck and crush it. Thank you, boss. All right, bye. Bye. Thank you. Bye.